अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, नवाज़-ए-उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम सेंट्रल टीईटी के चलाए जाने वाले शिफ्ट वाइज के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। साइंस क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करेंगे। साइंस क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, X is a plant which is an autotroph as well as a heterotroph. What could X be? तो X एक ऐसा प्लांट है वो ऑटोट्रोफ भी है और हेटेरोट्रोफ भी है। तो इसके अंदर X कौन सा प्लांट हो सकता है? पिक्चर प्लांट, आल्गे, कस्क्यूटा, फंगई। ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ बोला है तो पिक्चर प्लांट, ये इसका प्लांट है, कस्क्यूटा, फंगई, तो ये सब ये नहीं हो सकते। आल्गे क्या है? ऑटोट्रोफ भी है और हेटेरोट्रोफ भी है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। Next question number 62. Z is a microorganism present in the alimentary canal of human beings and other animals which aids in digestion of food. What is Z? तो एक Z एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एलिमेंट्री कैनल में मौजूद है ह्यूमन बींग्स में एंड अदर एनिमल्स विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 62। algae. Algae is the right answer. Next question. There are many steps involved in making wool from sheep. Which of the following represent the correct sequence of the steps? तो यहाँ पर शीप का वूल जो बनाते हैं उसका एक प्रोसेस है। वो कैसा बनता है वूल? तो शीप से जब निकाला जाता है तो वूल को कैसा प्रिपेयर करते हैं, उससे कुछ स्टेप्स है वो है नहीं, यहाँ पर रीअरेंज करना है, हमें करेक्टली अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या सही हो सकता है? देखिए, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, रोलिंग इनटू यार्न, वीविंग। तो पहला क्या करते हैं हम? सॉर्टिंग करते हैं, तो उसको निकालते हैं, पूरा अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट स्काउरिंग करना, शेयरिंग करना, रोलिंग इनटू यार्न, डाइंग, वीविंग। तो पहले करते हैं उसको निकालती हैं, उसके बाद स्काउरिंग, उसको पूरा अलग अलग करते हैं, शेयरिंग तो शेयरिंग करती। नेक्स्ट रोलिंग इनटू यार्न, डाइंग, कलरिंग करना और वेविंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स? तो यहाँ पर जॉइंट्स दिए हैं, वो किस किस के हैं? तो यहाँ पर सही तरीके से जुड़ाना है हमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर रहता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो ये एल्बो में रहता है, तो यहाँ पर ए का 4 हुआ। नेक्स्ट पाइवोटल जॉइंट, ये पाइवोटल जॉइंट कहाँ रहता है? आर्म्स एंड शोल्डर्स पर। हिंज जॉइंट कहाँ रहता है? जॉ में रहता। तो फिक्स जॉइंट कहाँ है? नेक पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो सकता है 64 का? यहाँ पर देखिए ए का 4, तो यहाँ पर कौन सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम नहीं हो सकता। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 23 pairs of chromosome. The unfertilized egg has 1X, that is sex chromosome. Next, the unfertilized egg has 22 chromosome. 65 का third is the right answer. The unfertilized egg has 1X
क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, वो सेक्स को क्या करता है, कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स विच आर हाईली reactive with air, hence stored in kerosene. What could X and Y be? X and Y एक केमिकल है, वो हाईली रिएक्टिव है, उससे हम ज़्यादातर केरोसिन में स्टोर कर रखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, फॉस्फोरस एंड सोडियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सोडियम एंड पोटेशियम, सल्फर एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, सल्फर एंड पोटेशियम। Next question, X is a synthetic fiber which resembles wool and is used to make shawls and sweaters and blankets. What could X be? X एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसे हम वूल बनाने के लिए और शॉल्स बनाने के, स्वेटर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वो कौन सा फाइबर है, रेयॉन है, एक्रिलिक है, नाइलॉन है या पॉलिस्टर है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नाइलॉन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following situation water cannot be used to extinguish fires? तो फायर को बुझाने के लिए वाटर यहाँ पर यूज नहीं करते, वो किस में, इलेक्ट्रिकल फायर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेपर, किस में हम यूज नहीं करते? इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर शॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड में भी यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर में भी यूज़ करते हैं, तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल में हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compilation of data on population status of endangered species is। तो endangered species का पॉपुलेशन डाटा हम किस में कलेक्ट करते हैं, किस में लिखते हैं, ग्रीन डाटा बुक, ब्राउन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, वाइट डाटा। तो यहाँ पर कौन सा सही है, रेड डाटा बुक। तो 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल P displaces metal Q from its salt solution but is not able to displace metal R from its salt solution. Identify the least reactive metal. तो P, यहाँ पर एक P एक मेटल है, वो Q मेटल को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसेस मेटल Q from its salt solution but is not able to displace metal R from its salt solution. तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पूछेंगे। P है, Q है, R है, कैनॉट बी डिटरमाइन, कौन सा है? तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर P है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। P किसको डिस्प्लेस कर रहा है, displace metal Q from its salt solution but not displace metal R. तो यहाँ पर P is the least reactive metal. Next question. Shyama is standing 1 meter away from a plane mirror and is observing her image. She takes 2 steps backward. What change would she see in her image? The image increases in size but remains at the same distance from mirror. The image remains the same size but moves farther away from the mirror. Shama is standing 1 meter away from plane mirror. Shama 1 meter दूरी पर है प्लेन मिरर से, is observing her image. She takes 2 steps backward. What change would she see in her image? वो प्लेन मिरर के पास खड़ी है 1 मीटर दूरी पर, तो ऑब्जर्व कर रही है। शी टेक्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो पीछे चली जाती है तो 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर मिरर में क्या चेंजेस नजर आते हैं? द इमेज इंक्रीज इन साइज बट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। द इमेज रिमेन्स द सेम साइज बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। द इमेज रिमेन्स द सेम साइज बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। इमेज तो यहाँ पर सही देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लेन मिरर है तो इमेज को सेम ही दिखाई देगी, लेकिन फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर, जरा दूर नजर आती है ऊपर। तो यहाँ पर 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a green cube with side of 0.25 centimeter, a red cube with side of 0.35 meter and a yellow cube having the side of 0.5 are lying on a flat table. Which of them would exert more pressure on the table?
given that mass of all cubes is same. तो यहाँ पर which of them would exert more pressure, यहाँ पर more pressure कौन से क्यूब में है, mass of all cubes is same, तो क्या all will exert same pressure, green cube, red cube, yellow cube. तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, green cube. Green cube is a 0.25 सेंटीमीटर और रेड क्यूब इज 0.35 मीटर. तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर किस में लगाना होगा हमें, ग्रीन क्यूब में. तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर चूज करना है. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल होती है, यानी द हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाइयर इज द पिच. फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो पिच भी हाइयर होती है, भी सही है. ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेशन. साउंड इन ए फ्लूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ए कोलुमन. तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेशन, ये नहीं हो सकता. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets comprises liquid which are good conductor of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, लेमन जूस, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये नहीं हो सकता. डिस्टिल वाटर, शैम्पू, विनेगर, ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर. तो लेमन जूस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विनेगर ऑल्सो, टैप वाटर. तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3. वेजिटेबल है तो ये नहीं हो सकता. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets comprises physical changes? Shredding of paper. Physical changes में कौन है, shredding of paper, baking a cake, ये physical change होता है. bursting of crackers भी होता है. boiling of water, cooking of, ये तो chemical change में आता है. rusting of iron, ये भी chemical change में आता. boiling of water, burning of paper, setting of milk into curd, breaking a glass. ये पूरे नहीं हो सकते. बर्निंग ऑफ, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू, ये भी केमिकल चेंजेस. तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज, ग्राइंडिंग व्हीट, ये भी फिजिकल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर, दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज. तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा इज ड्राइविंग फ्रॉम हर ऑफिस टू हर होम which is 22 kilometer away. She travels at a speed of 48 kilometer per hour for 10 minutes. She stops for 15 minutes at a market to buy some items. She resumes her journey at a speed of 56 km per hour. What is her average speed of entire journey? तो एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होगा, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1, 33 kilometers per hour. Next question, which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of chalk and water? Filtration, decantation, sedimentation, sublimation. तो हम चॉक को कैसे सेपरेट करेंगे, चॉक एंड वाटर को, तो यहाँ पर सही जवाब है सेडिमेंटेशन. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Given below are a few statements about the phenomena of shadow formation of an object. Identify the correct statement. Size of shadow depends upon the distance between light source and the object. तो सही है, option A is the right. Next, position of shadow depends upon the direction of incident light. ये नहीं हो सकता, ये wrong statement है. This is wrong. The color of shadow depends upon the color of object. ये भी तो नहीं हो सकता. Shadow formation can be explained on the same concept of image formation. तो ये सही है. तो यहाँ पर A and D is the right answer. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है. 78 का 4. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Identify the correct statement from among the following. The percolation rate of water in clayey soil is higher than that of loamy soil. The percolation rate of water in loamy soil is higher than that of sandy soil. Percolation absorption of water in loamy soil में ज़्यादा होता है, sandy soil में कम होता है, तो ये इससे ज़्यादा है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Next question. X is a vitamin which is fat soluble and helps in keeping skin and eye healthy. Y represent food items rich in this vitamin. Identify X and Y. तो एक ऐसा विटामिन है जो स्किन एंड आई को हेल्दी रखता है, तो कौन सा हो सकता है? कौन सा है? विटामिन डी है. तो रिप्रेजेंट फूड आइटम्स रिच इन द विटामिन, वो है सिट्रस फ्रूट. तो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Vitamin D and citrus fruit. Next question. Which of the following statement best describes the nature of science? Science is about appreciation of nature. Science is an individual pursuit. Science is a value-free and objective to the core. तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the need for having a historically valid science curriculum? Historically valid science curriculum कौन सी नीड चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, it helps understand low social factor influence the development of science. ये नहीं है. How social factors ये तो नहीं हो सकता. It helps the learner to view science as infallible. ये सही है. It helps learner appreciate how the concept of science evolve with time. It helps to highlight the achievement of Western countries. Highlights achievement of Western countries. ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer, only B. Next question. According to NCF 2005, the pedagogic practices recommended at the upper primary stage are group discussion, designing simple, investigation, verification of the theoretical principle. तो यहाँ पर अपर प्राइमरी स्टेज के लिए कौन सा सही है? NCF 2005 के मुताबिक कौन सा सही हो सकता है? डिजाइनिंग ग्रुप डिस्कशन, डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन, ये सही है. नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ द थेरोटिकल प्रिंसिपल, ये भी सही है. तो यहाँ पर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Next question. From the following statement about science, identify the one that is false. यहाँ पर false पूछा है. False. तो कौन सा है? Scientific ideas are tentative. False क्या है? Technology has preceded science in the history of civilization. The scientific method is the only guide for conducting speech. तो only यहाँ पर क्या है? नेगेटिव थिंग है, तो इसके लिए बस सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 4 का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ashu was given individual task of measuring the body temperature of at least 5 classmates. Following are the task specific indicators to assess Ashu. Identify the undesirable indicator. Washes and wipes thermometer before use. तो ये सर थर्मोमीटर को यूज करने से पहले हम क्या करना है? वॉश करना है वेब्स को. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. जग से थर्मोमीटर टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी. जग नहीं करना. ड्रॉज कंक्लूजन द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज एग्जैक्टली हर एक ला एग्जैक्टली 37 नहीं हो सकता. शोज क्यूरियोसिटी इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन हाउ टू मेजर टेम्परेचर इन डॉग्स इवन. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A science teacher with a constructivist framework would be in agreement to all the following except. एक साइंस टीचर के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कैसा कराना है? एक्सेप्ट से छोड़कर.
यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, learners in initiative ideas always corresponds with scientific knowledge. Learners come from diverse backgrounds and their perceptions and beliefs vary. Learners' ideas that they bring to classroom are important. Learners' ideas are resistant to change by conventional teaching learning. तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो सकता है? Learners come from diverse backgrounds and their perceptions and beliefs are vary. तो अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. To make your science classes more gender inclusive, you may do all of the following. Accept challenging stereotypes, selecting activities that emphasize cooperation and caring, teaching students to recognize gender inequalities, encouraging girls to be more competitive than boys. तो यहाँ पर जेंडर इंक्लूसिव को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग. आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स. ऑप्शन नंबर 1 इज द right answer. Next question. A teacher brought into her classroom half kg flour, some warm water, sugar and yeast and asked following questions. Identify the questions that are divergent. तो यहाँ पर डाइवर्ज करके क्वेश्चंस को पूछा है. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? What do you think I am going to do with all these things? Will sugar dissolve easily in warm water? Will yeast dissolve in water? Name some of the yeastables that are baked. Will sugar dissolve easily in warm water? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, will yeast dissolve in water? तो यहाँ पर बी एंड सी. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप्स फॉर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट. फील्ड ट्रिप को ले जाने का क्या मकसद होता है? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट इट इन्वॉल्व्स ऑल द सेंसेस. It can cater to large groups. It can be arranged easily and quickly. It gives individual attentions. It involves all the senses. 89 का सही जवाब क्या है? देखिए, it involves all the senses. ये सही है. Next, it can cater to large group. ये भी सही है. It can be arranged easily and quickly. यानी सब it gives individual attention. तो यहाँ पर ये बी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 4. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 21 का लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच. लेसन प्लानिंग के लिए इंक्वायरी अप्रोच कौन सा है? प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन बिफोर प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक टर्म्स, स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल. तो यहाँ पर तीनों भी सही है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हम दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे. तो यहाँ पर दिसंबर 21 के क्वेश्चन हो चुके हैं. नेक्स्ट हम दिसंबर 22 के क्वेश्चन देखेंगे. साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेबल डिपिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूजेस ऑफ मटेरियल्स. रीड द फॉलोइंग टेबल डिपिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूजेस ऑफ मटेरियल. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मैलिएबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, स्ट्रॉन्ग, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो यहाँ पर यूज क्या कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर मैलिएबल, इलेक्ट्रोसिंसल, कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, रैपिंग फूड आइटम्स. मैलिएबल को हम कहाँ यूज करते हैं? मैकिंग, रैपिंग फूड आइटम्स. हाई मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है? हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन हाई मेल्टिंग पॉइंट, heating elements of an appliance. Next, good conductor of heat and light.
इलेक्ट्रोड्स इन सेल्स। स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मेकिंग थर्मोमीटर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ए का थर्ड है, बी का 5 है, सी का 1 है, ए का थर्ड मैलिएबल क्या? रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर? बी का हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ appliances. Next, good conductor of heat and light, electrodes in cell. Next, strong construct bridges. Next, high coefficient of thermal expansion making thermometers. Option number 3 is the right answer. Next question, which of the following vitamins are fat soluble? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी कौन से? विटामिन ई एंड विटामिन बी। नेक्स्ट 62 का विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correctly describes the functions of transpiration in plants? It helps in cooling the plant, it helps in absorption and distribution of water and minerals to leaves, it helps in exchange of gases with the environment। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स इन cooling the plant. B say it helps in absorption and distribution of water to minerals to leaves. It helps in exchange of gases with the environment. तीनों भी सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement are true regarding the pressure exerted on a certain area by a brick? Pressure is universally proportional to area. So option number is the direction of pressure is opposite to the applied force. Unit of pressure is the same as that of the force. तो नहीं सकता है, तो option number 2 is the right answer. Only A. Next question. Shaurya went for a trekking trip. During the trek, he accidentally placed his hand on the brush. He felt the sting and his hand started itching. The instructor immediately took a leaf of one of the plant, crushed into or rubbed into of the affected area. What could be the nature of the chemical which caused sting and nature of the leaf respectively? Nature of the chemical which caused sting, nature of juice in the leaf. तो नेचर ऑफ द केमिकल, तो ईचिंग स्टार्ट होने लगी, तो क्या हो सकता है? वो एसिडिक है। तो नेचर ऑफ द जूस इज द लीफ इज बेसिक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? 65, ऑप्शन नंबर 1 एसिडिक एंड बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, whales, sharks, dolphins and fish are all aquatic animals. Which of the following statement describe the respiratory system correctly? तो यहाँ पर whales and dolphins breathe through lungs. वो गिल्स के साथ ब्रीथ नहीं करते, whales and dolphins breathe through lungs. तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Next question, choose the correct sequence of steps removal of waste in the human excretory system. तो यहाँ पर सीक्वेंस सही करना है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। तो पहला क्या आता है? किडनीज आते हैं, नेक्स्ट यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग, spores formation, fragmentation, budding. Cutting,
क्या करते हैं हम, रोजेस को कट करते हैं, तो कटिंग रोजेस, स्पोर फॉर्मेशन, ferns, next fragmentation, spirograph, budding, yeast. So option number 2 is the right answer. Next question. Consider the following aspects of substance involved in a chemical reaction. Physical state of all the substance, number of molecules of all substance, number of atoms of each substance, number of atoms of each substance. Next, sum of masses of all atoms of substances. So C and D is the right answer. So 16 का सही है option number 3. C and D is the right answer. Next question. A gas is produced when a metal reacts with acids. Which of the following statement is true about this gas? A gas is produced when a metal reacts with acid. मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने से गैस प्रोड्यूस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस गैस? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट हैज पंजेंट स्मेल, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, it burns with pop sound. Option number 3 is the right answer. Next question. A man purchased eggs to use it as a fuel for cooking. What qualities eggs should possess to be used as fuel? Question number. लो इग्निशन टेम्परेचर चीप. इसके लिए तो नहीं, लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं हो सकता. हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर. हाई कैलोरीफिक, लो इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक. तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप. चीप के लिए तो लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक. तो सी एंड नेक्स्ट सही है ऑप्शन नंबर 4 है. सी एंड डी, सॉरी सी एंड डी. Moderate ignition temperature, cheap. Next question. The purpose of adding potassium permanganate in water in a distillation plant. The purpose of adding potassium permanganate in water in a distillation plant is to decrease the boiling temperature of water, increase the pH of water, remove the inorganic impurity, increase the boiling point of water. तो यहाँ पर सही जवाब क्या आ सकता है? रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. पोटेशियम परमानेंट डिस्टिलेशन प्लांट में क्यों डालते हैं? रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन ये क्या दिखा रहा है? अ स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. व्हेन द स्विच इज ओपन द एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पर कौन सा सही है? Both A and R are false. Number 4 is the right answer. Next. A lighter and a heavier object possess the same kinetic energy. Which of the following statement will be true regarding their velocities? Lighter and heavier object possess same kinetic energy. तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हायर ऑब्जेक्ट. बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ हेवियर object is less than lighter object. Velocity cannot be compared. So velocity of heavier object is less than the lighter object. Next question. The place inside the earth crust where the earthquake originated is called as focus of the earthquake, epicenter of the earthquake, fault zone of the earthquake, seismic zone of the earth. तो यहाँ पर हम क्या बुलाते हैं? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट. तो अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher and student suggest a method to demagnetize a magnet. Some responses are dropping a magnet on floor several times,
ड्रॉपिंग द मैग्नेट ऑन फ्लोर सेवरल टाइम्स। तो मैग्नेट कैसे डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, सम रिस्पॉन्स। ड्रॉपिंग अ मैग्नेट ऑन फ्लोर सेवरल टाइम्स, मैग्नेट कैसे डैमेज हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ड्रॉपिंग अ मैग्नेट फॉर बार बार फेंकने से क्या होता है, मैग्नेट की ये कम हो जाती है कशिश। ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू टू हाफ्स, हीटिंग द मैग्नेट, हीट करने से भी उसका ये चला जाता है। थ्रोइंग द मैग्नेट इन मोटर बाय हैमरिंग इट, हैमरिंग करने से भी उसका ये चला जाता है। तो ये सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens submerged in liquid medium of higher refractive index will act as a divergent lens. So option number one is the right answer. Next question, the characteristic of sound that distinguish between two different sounds of same pitch and loudness. तो इसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर गेट। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the statement given below and choose the correct option. Refrigerator pipes are painted with a black color. Good absorbers of heat are also good radiator. तो यहाँ पर सही जवाब है both A and R true, but R is the correct explanation. Option number one is the right answer. Next question, which of the following is most appropriate sequence of planning of your science classroom using inquiry, approach, teaching of topic heat and temperature. तो यहाँ पर करेक्ट अरेंज करना चाहिए। एज स्टूडेंट टू इन्फर डायरेक्शन ऑफ हीट flow in different object, as student to explore what happens when they place a container with hot water inside a container with cold water, as student to describe। तो पहला क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए। नेक्स्ट, एज स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, नहीं एज स्टूडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नर्चरिंग creativity in science classroom among students, a teacher can do all the following except। तो क्रिएटिविटी इन साइंस क्लास में क्रिएटिविटी लाने के लिए हम बच्चों से क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर encourage student to frame answers in a prescribed manner, तो ये सही है, ऑप्शन वन सही है। देखेंगे ऑप्शन वन ना सही है। Assist student in developing models of inquiry, guide student to the use of multidiscipline, guide नहीं कर सकते, provide a rich variety of learning experience to student। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, encourage student to frame answers in a prescribed manner, तो एक्सेप्ट ये नहीं कर सकते, तो ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following steps would precede Which of the following steps would precede the rest in an inquiry-oriented class in which image formation in plane mirror is being introduced? Class 8. Student draw the ray diagram depicting the path of light as it travels from object to mirror to observe. Student place a number of objects at different position in front of a mirror and observe their images. तो सही जवाब क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर टू है। क्या बोल रहे हैं, छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं, रखकर क्या है वो अवलोकन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher wishes to apply the problem solving strategy to help student understand various ways to conserve energy in a school. The first step in the problem solving strategy will be collecting data about energy usage. Option number one is the right answer. Next question, a teacher asks the following questions while involving students in an investigatory activity on the germination of seeds. Questions while involving student investigatory activity of germination of seeds, तो germination of seeds के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीचर, how much do they grow if we double the amount of water, how much are they growing every week,
जो द फॉलोइंग क्रिटिकल स्किल्स आर डेवलप्ड बाय दीज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछने से बच्चों के अंदर क्या ला सकते हैं, कैसी क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। देखिए, controlling variable and observation. Option number 1 is the right answer. Next question. Consider the statement given below and choose the correct option. Darshan, a teacher should teach each science concept assuming students know nothing. Science is an abstract subject with no clear interconnection between scientific concepts. यहाँ पर क्या बोले, टीचर शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट assuming students know nothing. साइंस कॉन्सेप्ट को ऐसे शुरू करना चाहिए कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। वो तो नहीं हो सकता, बच्चों को सब कुछ मालूम होता है पहले से ही मालूम होता है कि उसे साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ता है। साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विच द नो क्लियर इंटरकनेक्टेड बिटवीन साइंटिफिक टॉपिक्स। कॉन्सेप्ट भी तो गलत है, तो यहाँ पर both assertion are false, both assertion of reasoning are false. Option number 4 is the right answer. Next question. Asking questions such as can you think of a different and better way of trying out your ideas after an investigatory project helps students to से क्वेश्चंस पूछने से कैन यू थिंक डिफरेंट वे, आप डिफरेंटली कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ आइडियाज दे सकते हैं। से क्वेश्चन पूछने से बच्चों के अंदर क्या आती है, रिफ्लेक्ट, क्रिटिकली, कम्युनिकेट, ऑब्जर्व, हाइपोथेसाइज, क्या हो सकता है इसके अंदर, रिफ्लेक्ट, क्रिटिकली। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही। Next question. A teacher introduced the topic of cyclones in class by asking the following questions without mentioning the topic to be taught. Have you heard about heavy rains in Western Bengal, Odisha in 21? Has anyone of you heard the term as? What could be the objective of the teacher behind asking these questions to students? तो यहाँ पर टीचर टॉपिक का नाम नहीं लिखा है बोर्ड पर, तो ये पूछ रही है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है क्या आपने कहीं वेस्ट बंगाल में बारिश ऐसे होते हुए देखा है, हेवी रेन्स देखा है। तो ऐसे पूछने का मतलब क्या है, वो क्या चेक कर रही है, टू चेक जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, टू मेक द क्लास अटेंटिव, टू कंस्ट्रक्ट द टॉपिक, द ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लास। क्या कर रही है टीचर यहाँ पर, तो यहाँ पर टू कंस्ट्रक्चुअलाइज द टॉपिक, टॉपिक को कंटेक्चुअलाइज कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द right answer. Next question. Which of the following attributes are essential components of scientific temper? Open-mindedness, skepticism, subjectivity, rigidity. तो open-mindedness ये ऑप्शन सही। Skepticism भी सही, तो ऑप्शन नंबर 3 था राइट है। Subjectivity, rigidity ये तो नेगेटिव होता है। Next, choose the correct statement. Science is a blend of logic and imagination. Logic पे है और imagination based science. तो option 1 is the right. Science is a process and not a product. नहीं, science is all of it. Science कुछ experiment ही हो सकता है, नहीं only science can calculate values among students only. तो ये negative, तो option number the right answer. तो यहाँ पर हम December 21 और December 22 के दोनों क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस कर चुके हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, तो तब तक के लिए क्वेश्चन पेपर लाएंगे, तो तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।